Hello students, welcome to my channel. This is fourth lecture of exercise 3.2b. In this lecture, we are going to discuss about integration of the form dx upon a plus b cos x or integration of dx upon a plus b sin x or integration of dx upon a plus b cos x plus c sin x. What are the values of a, b, c? Here a, b, c are any number. तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये टाइप में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं. सी a, b, c are any numbers, so I can take 3, a is 3 and b is 4, that is 3 plus 4 cos x, or integration of dx upon 3 minus 5 cos x. यहाँ पर हम 13 भी ले सकते हैं. इट मे बी 23, say integration of dx upon 23 minus 5 cos x, or it may be integration of dx upon 2 sin x plus 5 cos x minus 11. ओके, तो इस तरीके से हम हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं बिकॉज ऑफ ए बी सी आर एनी नंबर्स. ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करना है? सी यू हैव टू ऑब्जर्व दिस, इट इज यू अपॉन वी फॉर्म, राइट, बट देर इज नो यू अपॉन वी फॉर्मूला थ्रू आउट द इंटीग्रेशन. लेकिन हमने एक टाइप पढ़ा है u upon v में, that is integration of 1 upon or dx upon quadratic, means 1 upon quadratic polynomial a x square plus bx plus c, means integration of dx upon ax square plus bx plus c, that is integration of 1 upon quadratic polynomial. Okay, see this one you have to convert by standard form by using completing square method. तो क्या हम ये जो टाइप है, ये टाइप को जो गिवन टाइप है, इसे हम 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं. किस तरीके से? यू नो cos x, what is cos x? हाफ एंगल फॉर्मूला. देयर आर 4 रिजल्ट्स. cos x in terms of cos sin, से यू नो cos x एक सिंपल फॉर्म में लिख कर देते हैं हम. cos x is nothing but cos square x by 2 minus sin square x by 2. Similarly in terms of purely cos आ जाएगा. cos x in terms of purely sin sin होता है. और cos x और एक फॉर्मूला है, that is very very important. cos x is equal to 1 minus tan square x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2. Okay, and what is about sin x? Sin x having 2 results, or sin 2x having 2 results, that is in terms of sin x by 2, 2 sin x by 2 into cos x by 2, means sin x in terms of sin and cos form, or 2 tan x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2, means purely in terms of tan. अगर हमने यहाँ पे tan x by 2 का अगर t एज्यूम कर दिया हमने, तो क्या होगा? देखिए, if you have to assume that tan x by 2 is t, then you will get sin x is equal to twice t upon 1 plus t square, and cos x आ जाएगा हमें, cos x मिलेगा 1 minus t square upon 1 plus t square. Okay, cos x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. After simplifying, you will get integration of 1 upon quadratic polynomial in terms of t. That's it. Okay, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये इंटीग्रेशन ऑफ
integration of dx upon a plus b cos x or integration of dx upon a plus b sin x, or both sin and cos are together, that time you have to substitute t is equal to tan x by 2. Okay, what is x by 2? Tan inverse t. ये tan को इधर शिफ्ट कर देंगे हम, it become tan inverse t. Then x will be 2 times tan inverse t, right? X is equal to 2 times tan inverse t. Then differentiate this, you will get dx is equal to 2, keep as it is. What is derivative of tan inverse t? Derivative of tan inverse t is 1 upon 1 plus t square into dt. So dx will be twice dt upon 1 plus t square, right? So you have to remember this value only. Put t is equal to, I want to show you, put t is equal to tan x by 2 and you must remember dx. What is dx? 2 dt upon 1 plus t square. These two steps are not necessary, यानी ये लिखने की ज़रूरत नहीं एग्जाम में. डायरेक्ट t is equal to tan x by 2 लिख सकते हैं आप. Then after that you have to write dx. Okay, then we have sin x equal to 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. So it become twice t upon 1 plus t square, and cos x is equal to 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. So it become 1 minus t square upon 1 plus t square. Understood? तो यहाँ पर सबसे पहले इसे ब्रैकेट करना है आपको. पुट t is equal to tan x by 2. Then directly you have to write dx here, dx. Then उसके बाद sin x is equal to sin x डायरेक्ट वैल्यू लिखना है. ये बीच में का स्किप करना है फॉर्मूला. देन cos x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर. तो आप हज़ारों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते. ये सॉल्व ही नहीं कर सकते तो बना भी सकते आप. तो इसमें ये मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, याद रखना है आपने. तो sin x cos x और both are at denominator, then you have to apply this method. Now चलो हम let's start problems. Question number 1, evaluate integration of 1 upon 4 minus 5 cos x into dx. Solution. Let I is equal to given integration, that is integration of 1 upon 4 minus 5 cos x into dx. Put t is equal to tan x by 2. So dx equal to twice dt upon 1 plus t square. Also we have cos x equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. So you have to substitute both values dx and cos x in the given integration. So the given integration will be I is equal to a as it is लिखना है, is equal to what is dx? dx ये आ गया, dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square divided by 4 as it is रखिए, minus and also you carry as it is into 5. What is cos x? Cos x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. Okay, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, dx and cos x. 4 and 5 are constant, you have to carry as it is. खाली दोनों वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करना है हमें. Then you have to simplify this denominator. How to simplify? See here, taking cross multiplication. And next step में क्या आ जाएगा? 4 into bracket this denominator minus 5 into bracket 1 minus t square upon 1 plus t square. Okay, चलो देखते हैं. I is equal to given integration, I is equal to twice dt upon 1 plus t square divided by 4 4 into bracket 1 plus t square minus 5 into bracket 1 minus t square upon 1 plus t square. अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम? 1 plus t square 1 plus t square get cancel. ये ब्रैकेट ओपन करना है, इस सेकेंड ब्रैकेट also you have to open that. That is nothing but integration of twice dt upon 4 plus t. ये यहाँ ये नहीं कैरी करेंगे तो भी चलेगा. That is 4 plus 4t square minus 5 plus minus minus become plus 5t square, and that is nothing but twice dt upon 9t square minus 1.
आई इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट डी टी अपॉन 9t स्क्वेयर माइनस 1। अभी देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल फॉर्म आ गया, डिनोमिनेटर इज डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स एंड वन ऑफ द टर्म इज वेरिएबल, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्म टी स्क्वेयर। अगर टी स्क्वेयर है तो यू हैव टू मेक अ कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वेयर इज 1 फर्स्ट। तो हाउ टू make coefficient of t square is 1 by taking 9 common from denominator. So you have to write 2 upon 9 outside the integration sign, that is 2 upon 9 into integration of dt upon t square minus 1 by 9. ओके 1 by 9। तो ये जो फैक्टर है कांस्टेंट नंबर, इससे परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे बिकॉज ऑफ वी हैव फॉर्मूली सी डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, इट इज डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर टर्म। सो इट बिकम 2 by 9 into integration of dt upon t square minus 1 by 3 the whole square. Then according this result, okay, what is this result? 1 upon twice a, see this result, this is nothing but 1 upon twice a into log of x minus a upon x plus a. Then by using that formula you will get 2 by 9 keep as it is into 1 upon 2 into a, what is a here? 1 by 3 into log of mod of t minus 1 by 3 upon t plus 1 by 3 plus c. So you have to simplify this one, that is taking LCM and cross multiply, you will get 1 by 3, here 2 to get cancel. I want to show you, see here 2 get cancel, here 3 also get cancel, remaining only 1 3 is there, that is 1 by 3 into log of 3t minus 1 upon 3t plus 1. What is the last step? Here resubstitute the value of t, it become 1 by 3 into log of 3 tan x by 2 minus 1 upon 3 times tan x by 2 plus 1 plus c. That's it. Okay, it's a very simple form. Just you remember the method, that is put t is equal to tan x by 2. Another question is here, evaluate integration of dx upon 3 plus cos x. Solution, let I is equal to given integration, then put t is equal to tan x by 2. So dx will be twice dt upon 1 plus t square, and we have cos x equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. So the given integration will be dx, integration of dx upon 3 plus cos x. Here you have to substitute the value of dx and cos x. What is dx? Twice dt upon 1 plus t square divided by 3 plus cos x means 1 minus t square upon 1 plus t square. So you have to simplify denominator here by using same procedure, again taking LCM and cross multiplication. Here 1 plus t square get cancel, 1 plus t square get cancel, it is nothing but 2 dt. Here you have to write 2 outside the integration sign, that is 2 into integration of dt upon 2t square plus 4. Again first you make a coefficient of t square is 1 and taking 2 common, this 2 to get cancelled, that is integration of dt upon t square plus 2. What is 2? Root 2 the whole square, and it is nothing but tan inverse form. What is the result here? 1 upon 2 1 upon a into tan inverse of t upon root 2 means tan inverse of x upon a. So it become 1 upon a, what is a here? Root 2, 1 upon root 2 into tan inverse of t upon root 2 plus c. By using this formula, you know this result, that is integration of dx upon x square plus a square is equal to 1 upon a into tan inverse of x upon a plus c, this one. Okay. Now last step is substitute the value of t, it become 1 upon root 2 into tan inverse of tan x by 2 divided by root 2 प्लस सी, दैट्स इट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसान से सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 प्लस 5 cos x। अभी यहाँ पर 4
के बजाय आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, मीन्स यू कैन रिप्लेस ए एंड बी बाय एनी नंबर, मीन्स ए बी सी आर एनी नंबर यू कैन सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर भी खाली A2 आ गया, B3 आ गया, सेम स्ट्रक्चर है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी आने दो बीच में। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप आसान से कर सकते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर है, जस्ट माइनस साइन, बीच में माइनस साइन है, तो आप सेम टाइप का क्वेश्चन आसान से कर सकते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5। यहाँ पे दोनों भी आ गए, साइन एंड कॉस, तो सेम प्रोसीजर है। हाँ, इट इज साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, आपको डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, then after simplifying put t is equal to tan x. Okay, that was a different one, and here it is linear form, that is sin x and cos x only, or purely sin x or cos x is there, तो इसमें मेथड थोड़ा अलग है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन, पुट t इज इक्वल टू tan x बाय 2, so dx will be twice dt upon 1 plus t square, and we have sin x is equal to twice dt upon 1 plus t square, and cos x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. So the given integration will be, here you have to substitute the value of dx, sin x and cos x. It become I is equal to twice dt upon 1 plus t square divided by 3 into sin x. What is sin x here? I want to show you. Sin x is 2 dt upon 1 plus t square plus 4 into cos x. What is cos x? 1 minus t square upon 1 plus t square plus 5, keep as it is. Now, सबसे पहले अभी यहाँ पे, now first you have to simplify denominator, okay, by taking LCM and cross multiplication. What is LCM? 1 plus t square, LCM is 1 plus t square. So, 3 into 2 it becomes 6, okay, then 4 into bracket, इस तरीके से आएगा, 4 into bracket 1 minus t square, then you have to open this, 4 into 1 is 4 minus, sorry, plus 4 into minus t square, that is minus 4t square, then 5 into bracket 1 plus t square, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो इट बिकम 5 प्लस 5t स्क्वेयर अपॉन दिस वन। तो यहाँ पर हम ये 1 प्लस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर गेट कैंसिल करेंगे। नाउ अभी यहाँ पे क्या है, ये देखिए, इसका सिमिलर टर्म एडिशन करना है हमें, दैट इज प्लस 5t स्क्वेयर माइनस 4t स्क्वेयर। हाउ मच इज दैट? प्लस 5t स्क्वेयर माइनस 4t स्क्वेयर, इट इज नथिंग बट प्लस t स्क्वेयर। फिर उसके बाद यहाँ पे लेंगे 6t and 4 plus 5, that is 9. So the next step will be I is equal to twice dt upon t square plus 6t plus 9. Then you have to write 2 outside the integration sign, that is 2 into integration of dt upon t square plus 6t plus 9, and it is quadratic form, 1 upon quadratic polynomial. How to evaluate this? Here you have to split 9 in terms of here you have to observe this, it is quadratic, but here 9 is perfect square, 9 is perfect square, and middle is also 6t, see I want to show you 60 I can write in this form, 2 into 3t, and that is nothing but 3 means here square root of 9. So this is nothing but perfect square form. So you have to write in this way, that is nothing but t plus 3 the whole square, that is perfect. Don't split 9 or don't add and subtract the number. Okay, it is perfect square term, all 3 are in perfect form. So you have to write 2 into integration of dt upon 3 plus t plus 3 the whole square. Okay, so it is not log of, so you have to write integration of dt upon by using x raised to n formula. What is x raised to 1 upon x raised to n? It is nothing but, 1 minute, I want to show you, 1 upon x raised to n is equal to x raised to minus n. So this one you have to write t plus 3 bracket raised to minus 2.
that is nothing but 2 times integration of t plus 3 bracket raised to minus 2 into dt. Then again you have to apply this formula, that is integration of ax plus b bracket raised to n with respect to x, and that is nothing but ax plus b bracket raised to n plus 1 divided by a into bracket n plus 1 plus c. That's it. Okay. So according to this result, it become 2 keep as it is into t plus 3 bracket raised to minus 2 plus 1. How much is that? Minus 1 upon minus 1 plus c. So it become minus 2 upon, इसे अभी नीचे ले लेंगे हम, 3 plus 2 bracket raised to minus 1, यानी रेस्ट टू निगेटिव होगा तो उसे नीचे लेंगे, दैट इज minus 2 upon 3 plus or t plus 3 plus c. That's it. Now again resubstitute t. What is t? T is equal to tan x by 2. So the final answer will be minus 2 upon tan x by 2 plus 3 plus c. That's it. Okay. Now evaluate integration of dx upon 3 into bracket 1 minus sin x minus cos x. Yes, first you have to open this bracket, then you will get previous form. Then put t is equal to, means you have to apply same previous method. Okay, this is for practice. Then 9th and 10th, these are also for practice, because of these are also similar type of question. तो ये आप कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम आपको लिखना है, पेपर आपको लिखना है, प्रैक्टिस आपकी होना चाहिए. हम अगर सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस मेरी होगी, याद रखो. ओके, तो हमने पहले बताया आप हज़ारों क्वेश्चंस इस सेम टाइप के सॉल्व कर सकते. एक दो अगर परफेक्ट कर दिया आपने, दैट्स इट. ओके, तो मेथड याद रखना है, प्रॉब्लम बहुत सारे बना सकते हम, राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स. सोल्यूशन, लेट आई इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रेशन. ये भी सिमिलर टाइप का है, लेकिन आप बोलेंगे यहाँ पे ए प्लस बी नहीं है, सी. हियर आई वांट टू शो यू व्हाट इज एक्स. एक्स इज वेरिएबल, तो कॉस एक्स वेरिएबल फॉर्म आ गया. व्हाट इज अबाउट अल्फा, अल्फा इज कांस्टेंट नंबर. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग इंटू डी एक्स, देन एक्स इज वेरिएबल. तो रिमेनिंग जो लेटर्स आएंगे अल्फा बीटा ई बी सी, उसे हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं. तो अल्फा इज कांस्टेंट, सो द होल टर्म कॉस अल्फा बिकम कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट आ गया, इसे बी एज्यूम करो, ए करो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं हम. दैट इज नथिंग बट ए प्लस, ये इस टाइप के क्वेश्चन आ गया, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स फॉर्म आ गया. इट इज प्रीवियस फॉर्म बिकॉज ऑफ अल्फा इज कांस्टेंट. तो ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ओके, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स ऐसा नहीं है, या कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स, ये वेरिएबल दोनों भी वेरिएबल नहीं है. तो अल्फा इज कांस्टेंट, सो कॉस अल्फा इज कांस्टेंट. तो ये टाइप में आ गया. तो ये तो मालूम है आपको. पुट टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, टी इज इक्वल टू टैन एक्स बाई 2. करेक्ट. पुट टी इज इक्वल टू टैन एक्स बाई 2, देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, एंड we have cos x equal to 1 minus t square upon 1 plus t square, right. So you have to substitute both the values dx and cos x in given integration. Therefore I is equal to dx upon 1 plus cos x, cos alpha into cos x, it become dx के बजाय हम लिखेंगे twice dt upon 1 plus t square upon 1 plus cos alpha, keep as it is, into what is cos x, 1 minus t square upon 1 plus t square. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज यूजुअल अभी तक जो मेथड अप्लाई करते आ रहे हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इसे मीन्स यू हैव टू सिंप्लीफाई डिनोमिनेटर फर्स्ट, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस कॉस अल्फा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर. तो यहाँ पर देखिए ये सिमिलर फैक्टर कैंसिल हो जाता है. ओके, अभी हम यहाँ ओपन करेंगे. सी 1 प्लस टी स्क्वेयर एज इट इज, इसे हम लिखेंगे दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी टी. ये नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ सिंप्लीफाई करते, दैट इज 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस कॉस अल्फा इंटू 1, इट बिकम प्लस कॉस अल्फा. देन
cos alpha into minus t square, that is nothing but minus cos alpha into t square. ओके, देन यहाँ पे टी स्क्वेयर टर्म हम एक साथ कलेक्ट करेंगे और 1 प्लस कॉस अल्फा एक साथ लिखेंगे. अंडरस्टूड? यानी यू हैव टू collect t square term, you have to write together similar terms, then again you have to apply basic formula. तो यहाँ हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, you will get integration of dt upon 1 plus t square upon, इस तरीके से आ गया, then it become, या सबसे पहले वो कट भी करते तो भी चलता है, then t square कॉमन लेंगे यहाँ से, t square into bracket 1 minus cos alpha plus 1 plus into bracket 1 plus cos alpha. What is 1 minus cos alpha? 2 sin square alpha by 2. So it become twice, integration of twice dt upon t square into 2 sin square x alpha by 2 plus, what is 1 plus cos alpha? 2 cos square alpha by 2. Taking 2 sin square alpha by 2 common, because of here, see, this one is constant, this is constant and t square is variable. Means t square का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसे कॉमन लेते हैं हम, तो 2 cos square कॉमन ले लेंगे हम, इट बिकम 2 dt, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन 2 sin square x अल्फा बाय 2 कॉमन लेंगे, 2 sin square अल्फा बाय 2 कॉमन इनटू ब्रैकेट t square प्लस 2 cos square alpha by 2 divided by 2 sin square alpha by 2. See, 2 cos square, I want to show you, 2 cos square alpha by 2 divided by 2 sin square alpha by 2. Here 2 to get cancel, cos square upon sin square is nothing but cot square, you have to carry as it is angle alpha by 2. Okay, now here again 2 to get cancel here, that is nothing but 1 upon sin square. What is sin square alpha by 2? It is constant, you have to write outside the integration sign, so it become 1 upon sin square alpha by 2 into integration of dt upon t square plus cos square alpha by 2, sorry, cot square alpha by 2, and it is tan inverse form. So you know this formula, that is I want to show you, it is nothing but dx upon x square plus a square is nothing but 1 upon a into tan inverse of x upon a plus c. Okay, what is a here? A is equal to cot alpha by 2, and what is x? T. So it become 1 upon sin square alpha by 2 into 1 upon a. What is 1 upon a? That is 1 upon cot alpha by 2 into tan inverse of t upon cot alpha by 2 plus c. Now you have to simplify this one. What is sin square? Sin square alpha by 2 is nothing but sin alpha by 2 into sin alpha by 2, and 1 upon cot is nothing but tan, tan is nothing but sin upon cos, so it is nothing but 1 upon sin square alpha by 2 into tan alpha by 2 into tan inverse. So you can skip this step. Okay, ये स्टेप स्किप कर सकते हैं आप, डायरेक्ट सिंपलीफाई स्टेप लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू व्हाट इज tan sin alpha by 2 upon cos alpha by 2 into tan inverse of 1 upon tan, here is not a square, I will show you, 1 minute. See here, this is not square, okay, that is x by a here, and 1 upon cot, see 1 upon cot alpha by 2 is nothing but tan alpha by 2 into t. Okay, now here one sin get cancelled, sin alpha by 2 get cancelled here, and what is the remaining term here? 1 upon sin alpha by 2 into cos alpha by 2. Okay, that is nothing but 2 upon sin alpha into tan inverse of tan alpha by 2 into t plus c. Okay, see how you will get that? That is nothing but इस तरीके से आएगा, that is 1 upon sin alpha by 2 into cos alpha by 2 into tan inverse of tan alpha by 2 into t plus c. Okay, see here just you multiply and divide by 2 here, you will multiply and divide by 2, what upon 2 sin alpha by 2 into cos alpha by 2, it is nothing but sin alpha. Okay, it is nothing but sin alpha, means 2 upon sin alpha,
right, because of multiple angle here, means half multiple angle, and that is nothing but 2 upon sin alpha into tan inverse of tan alpha by 2 into t plus c. What is 1 upon sin alpha? Cosec alpha, means 2 I is equal to 2 into cosec alpha into tan inverse of tan alpha by 2 into t. What is t? Tan x by 2 plus c. That's it. And to question number 12 for practice, same type. Here alpha is constant, then cos alpha is also constant number. Okay. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है देन इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. नाउ नेक्स्ट टाइप, मान लो अगर साइन एक्स के बजाय, हमने प्रीवियस टाइप देखा, ये देखिए आपको दिखा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स और बोथ साइन एक्स एंड कॉस एक्स. मान लो अगर साइन 2x आ गया और कॉस 2x आ गया तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसे? हाउ टू इंटीग्रेट इफ इट इज साइन एक्स और साइन 2x और कॉस 2x? ओके, वी हैव कॉस 2x. व्हाट इज कॉस 2x? कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan square x upon 1 plus tan square x. Okay, cos 2x is equal to, I want to show you, yes, cos, 1 minute, cos 2x is equal to 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x, and sin 2x is equal to, this is multiple angle, not half angle. Previous was half angle. That is 2 tan x upon 1 plus tan square x. Correct. अगर हम tan x को, right, if you have to substitute tan x is t, tan x is t, then it become cos 2x. क्या आ जाएगा? What is cos 2x? It become 1 minus t square अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर एंड साइन 2x आ जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर. सो इफ इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस b cos 2x और sin 2x और बोथ, देन पुट t इज इक्वल टू tan x. सो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर. तो यहाँ 2 नहीं आता, इतना याद रखना है. dx is equal to dt upon 1 plus t square. And what is sin x? Sin x and cos x are similar. Sin 2x and cos 2x are similar, that is same thing, 2t upon 1 plus t square, and cos 2x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. Okay, then this integration reduced to integration of 1 upon quadratic form. Okay, after substitute these dx, sin x, cos x or sin 2x, cos 2x, it become integration of dt upon t quadratic polynomial. चलो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स. क्वेश्चन नंबर 13, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3 plus 2 sin 2x plus 4 cos 2x. Solution, the given integration is denoted by I. Let I is equal to given integration, put t is equal to tan x. So dx is equal to dt upon 1 plus t square and sin 2x is equal to twice t upon 1 plus t square. Similarly, cos 2x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. So the given integration I become dt is equal to 3 plus 2 sin 2x plus 4 cos 2x. It become, अभी यहाँ पे हम dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. What is dx? dx is nothing but twice dt upon 1 plus t square. sin 2x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे twice t upon 1 plus t square, and cos 2x is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. So you have to simplify denominator first by taking LCM and cross multiplication. That is 3 multiplied by 3, इसे मल्टीप्लाई करेगा 3 into bracket 1 plus t square plus 2 into 2 4t and 4 into bracket 1 plus t square. Now here 1 plus t square get cancelled. Then what is next step? That is integration of dt upon, open the bracket, that is 3 plus 3t square plus 4t plus 4 minus 4t square. अभी यहाँ पे हम एडिशन करेंगे
लाइक टर्म्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है. 3t square minus 4t square, how much is that? Minus t square. That is integration of dt upon minus t square plus 4t plus 7. Okay, it means it become integration of dt upon 7 plus 4t minus t square. यहाँ से हम माइनस साइन भी कॉमन ले सकते हैं. इट बिकम माइनस इंटू ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ dt upon t square minus 4t minus 7. Now here you have to apply completing square method, that is t minus sign keep as it is, minus into bracket dt upon t square minus 4t. You have to add and subtract half into coefficient of t the whole square, that is half into what is coefficient of t here, that become minus 4 the whole square, and that is nothing but here 2 to get cancelled. Minus 2 square is 4 plus 4. You have to add 4 and subtract 4. Okay, by previous method. Understood? By completing square method. Now dt is equal to, तो इसके बाद क्या करेंगे, 3 टर्म लेके इसे ब्रैकेट करना है. यू हैव टू मेक ब्रैकेट बाय टेकिंग दिस 3 टर्म्स, जो टर्म ऐड कर रहे हो इसे लेके. ओके, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसके एडिशन करेंगे, दैट इज माइनस 11 आ जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन in a bracket t square minus 40 plus 4 minus 11, and that is nothing but integration of minus integration of dt upon t minus 2 the whole square minus under root 11 the whole square, and it is nothing but 1 upon twice a into log of t minus under root a. See, by using this formula I want to show you, that is integration of dx upon x square minus a square is equal to 1 upon twice a into log of mod of x minus a upon x plus a plus c. That's it. Okay, तो ये फॉर्मूला से हम नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए, वट इज ए, रूट 11 इंटू लॉग ऑफ x minus a, what is x here, t minus 2, and what is a is equal to under root 11. So according this result it become minus 1 upon 2 into under root 11 into log of t minus 2 minus under root 11 divided by t minus 2 plus under root 11. So you have to simplify this and resubstitute the value of t. It become minus I is equal to minus 1 upon 2 into under root 11 into log of tan x. What is t? Tan x, taking minus sign common from both the terms, that is minus into bracket 2 plus under root 11 divided by tan x. What is t? Tan x minus 2, minus sign common, minus into bracket 2 minus under root 11 plus c. That's it. This is the final answer. Okay, तो एकदम आसान टाइप है, आपको खाली मेथड याद रखना है, राइट. नेक्स्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, साइन 2x कॉस 2x से लेके और बोथ साइन एंड कॉस, राइट. तो यहाँ पर ऑल टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए. अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यू हैव टू सब्सक्राइब दिस एंड यू हैव टू share with your friends.